In this video, we will discuss about the solid states of matter. In the previous video, we have discussed about the liquid state of liquid state of matter. In this video, we will discuss about the solid state of matter. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर का जो सॉलिड स्टेट होता है वो क्या होता है, उसकी कितनी किस्में होती है। और इससे पहले हम पढ़ चुके जो मैटर का लिक्विड स्टेट है और गैस स्टेट है, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट। सो in solid state of matter, the particles, molecules, ions are closely packed in a fixed pattern. In solids, there occur a strong force of attraction between the solid particles, which hold them firmly together so that they cannot leave their position. Solid particle possesses only the vibrational motion, hence solids cannot diffuse like gases and solids. So, solids states of matter जो है, the particles means molecules or ions are closely packed. Solid state में molecules and ions closely packed होते हैं in a fixed pattern, एक मखसूस पैटर्न के जरिए से पैक्ट होते हैं। So in solids there occur a strong force of attraction between the solid particles सॉलिड में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान होती है, यानी सॉलिड्स के दरमियान में जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो पार्टिकल के दरमियान में होती है, वो उनको विच होल्ड देम फर्मली टुगेदर, वो उनको जुड़े रखती है, होल्ड रखती है, सो दैट दे कैन नॉट लीव देयर पोजिशन, ताकि वो अपनी पोजीशन को जो है उसको छोड़े ना। यानी सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो पैक्ड होते हैं फिक्स्ड पैटर्न के साथ। और सॉलिड्स में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन पार्टिकल्स को जोड़े रखती है ताकि वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग ना हो, अपनी पोजीशन को छोड़े ना। तो सॉलिड पार्टिकल also possesses only the vibrational motion. Means the solid particles सिर्फ vibrational motion पे इन्हिसार कर रखते हैं, उनमें सिर्फ vibrational motion होती है। Hence solid cannot diffuse like gases and liquids. तो solids को हम solids की जो particles है, जो ions है, उनको हम लिक्विड और गैस की तरह डिफ्यूज नहीं कर सकते। और डिफ्यूजन से मैंने पढ़ा था तो हवाले से कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कोलिजन बिटवीन देम, यानी डिफ्यूजन के हवाले से हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई
पार्टिकल्स हैं इस फॉर्म में, तो इन पार्टिकल्स का एक दूसरे से कोलिजन करना और फिर उस कोलिजन के बाद अ, इनका जो है ना मूवमेंट करना है दूसरी जगह पे, तो ये इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, और एक पढ़ा था ये डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन, और एक हमने पढ़ा था इफ्यूजन। इफ्यूजन 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 के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट कॉलिजन थ्रू अ होल, एक होल में से पार्टिकल्स का पास होना बट विदाउट कोलिजन, जबकि डिफ्यूजन में एक होल में से पार्टिकल्स का पास होना बट with collisions with each other. So this is about diffusion and diffusion. So you can say that in solids cannot diffuse like gases. Solids की जो particles होते हैं वो diffuse नहीं होते liquid और gas की तरह. So next one is topical properties of solids. Some topical properties of solids are, number first one is volume and shape. Volume and shape. So you can say that solids have strong intermolecular forces present between their particles, thus having a definite shape and a definite volume. Solids may strong inter जो molecular forces होती है जो पार्टिकल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से सॉलिड्स का डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है. डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है. So solids have intermolecular forces present between their particles, thus having definite shape and definite volume. So number second one is melting point. Melting point. So in solids state, the particles, you can say molecules or ions, are not free to move like gases. And liquids, molecules can only vibrate when the solid is heated. The kinetic energy of the molecules increases and the particle of solids vibrate with higher speed. So we can say that as far as the melting point in solid is concerned, in solid state, particles, molecules or ions are not free to move like gases and liquids. Solids में जो particles और ions होते हैं उसमें जो molecules और ions free movement नहीं कर सकते gases और liquid की तरह. तो molecules सिर्फ जो है वाइब्रेट कर सकते हैं सॉलिड में. सॉलिड्स में सिर्फ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं. कैन वाइब्रेट ओनली जब हम सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो बढ़ती है, इससे बढ़ जाती है. फिर क्या होता है, and the particles of the solids vibrate with higher speed. तो जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं हाई स्पीड के साथ. यानी जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं. और अगर हम व्हेन द एनर्जी इज कंटिन्यूसली सप्लाइड, अगर हम मुसलसल उसको गर्म करें सॉलिड को, तो एक स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज आता है एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर
mean position and start moving go really. तो अगर हम उसको मुसलसल गर्म करें तो एक स्टेज आता है, स्टेज इज रीच्ड एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर मेन पोजीशन, जिसमें पार्टिकल्स जो अपनी असल पोजीशन होती है वो छूट जाते हैं क्योंकि उनको मुसलसल हीट या एनर्जी मिल रही होती है और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें इजाफा होता जा रहा होता है। तो ये फिर क्या करते हैं, ये फ्रीली मूवमेंट शुरू कर लेते हैं। सो जिसकी वजह से सॉलिड्स स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो जिसकी वजह से जो सॉलिड्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। द टेम्परेचर at which a solid starts melting and exists in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point। यानी मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनीशन जो तारीफ है वो ये है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड start melt and exist in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point। और ये यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है लिक्विड स्टेट के साथ। यानी देखिए जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और मेल्ट होने के बाद एक पॉइंट आता है जो वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू कर देता है। तो ये जो पॉइंट है इसमें सॉलिड और लिक्विड के साथ, यानी अब ये न लिक्विड बना है ना सॉलिड पूरा यानी मेल्ट हुआ है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर यानी अगर इसको हम यहाँ पर ध्यान करें कि ये जो एक हमारे पास बैरियर है, हम ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो सॉलिड जब हम इसको हीटअप करेंगे, जब हम हीटअप करेंगे इसको तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जहाँ पे वो लिक्विड में मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ये जो पॉइंट है इसमें सॉलिड और लिक्विड डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं दूसरे के साथ। तो इस पॉइंट पे फिर ये जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है सॉलिड लिक्विड के साथ। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। So at melting point, temperature does not change and remain constant until the whole solid is converted into liquid state। ये जो पॉइंट है इसमें, यानी ये जो पॉइंट है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एक मखसूस टाइम तक। वो कौन सा टाइम है, यानी उस टाइम तक जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो यानी जब तक ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो तब तक जो है ना वो टेम्परेचर इस पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स on the strength of attractive forces that holds particles together in a fixed position। Melting point is the characteristics property of crystalline solid by which purity of solid can be checked down। तो melting point of a solid depend on strength of attractive forces। मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल के दरमियान उन पे डिपेंड करता है। दैट होल्ड्स पार्टिकल, जो पार्टिकल को जोड़े रखती है और एक फिक्स पोजीशन में।
The melting point is the characteristic property of crystalline solid uh, by which property of solid can be checked on. तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड करेक्टरिस्टिक्स बयान करती है बाय विच जो प्योरिटी ऑफ सॉलिड कैन बी चेक्ड ऑन यानी अक्सर हम जो प्योरिटी ऑफ सॉलिड्स है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे भी चेक करते हैं प्योरिटी ऑफ सॉलिड्स यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर हम मालूम करना चाहे तो मिसाल के तौर पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये जो एक्सपेरिमेंटल हमने इसको चेक किया है 160 आ गया और फिर इसको कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कि वो कितना होता है तो अगर वो भी 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है ये फिर वही साल्ट है तो इसकी फिर जो प्योरिटी है वो कंफर्म हो जाती है सो सॉलिड्स यहाँ पे सॉलिड्स लिक्विड सो मेल्टिंग पॉइंट एंड अगेन अगर ये सॉलिड लिक्विड हो सॉलिड में आएगा तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो we have discussed. Now, particles in solids are fixed and closely packed. Particles of solids neither move nor slide over their mean position. Therefore, the solids are rigid in their structure. The solids resist the deforming force due to hard structure and strong intermolecular force. पार्टिकल्स सॉलिड में जो होते हैं वो फिक्स्ड और क्लोजली पैक होते हैं तो ये पार्टिकल इन सॉलिड ना हरकत कर सकते ना स्लाइड कर सकते हैं अपनी पोजीशन से तो लिहाजा सॉलिड्स क्या होते हैं रिजिड होते हैं इनका स्ट्रक्चर सख्त होते हैं सॉलिड्स रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अगर हम सॉलिड्स को डिफॉर्म करना चाहे किसी और शेप में लेके जाना चाहे इसको हम डिफॉर्म यानी इसको किसी और शेप में लेके जाना चाहे तो फिर वो उस जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे उसको फोर्स करेगा रेजिस्ट करेगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हार्ड होती है सॉलिड की एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसके अंदर मौजूद होती है So next one is density. Solids have denser than liquids. Solids are denser than liquid and gases. In solids, the particles are closely packed and have no empty spaces between the particles. Their mass per unit volume is greater. Therefore, they have can say that they have higher density as compared to the other two states of matter. So, as far as density of solid is concerned, solids are denser than liquid and gases. Solids की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में बिकॉज डेंसिटी वी हैव प्रीवियसली डिस्कस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो डेंसिटी जो सॉलिड्स की होती है वो गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होती है इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती उनके पार्टिकल्स के दरमियान में तो देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको डेंसिटी कहते हैं इससे ग्रेटर ज़्यादा होती है तो देयरफॉर इसलिए दे हैव हायर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू दी
अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है। अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद ये कि जो गैस और लिक्विड है उसके मुकाबले में उनकी डेंसिटी, गैस और लिक्विड के मुकाबले में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। In the table, we have given comparison properties of solids, liquid, and gases. So we can say that this is a solid, liquid, and gases. So properties are here given. So the first one is mass of compared of three states of matter. The mass of three states of matter is compared here. So solids have definite mass, liquid have also definite mass, gases have also definite mass. Number two is shape. Solids have solids have definite shape, while that of liquids have, you can say, acquires the shape of the container. Uh, Liquids have no definite shape, but acquires the shape of the container. यानी लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, बल्कि इसको जिस कंटेनर में डाला जाता है ये वही शेप इख्तियार कर लेता है। सिमिलरली जो गैसेस है, गैसेस का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, तो इक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी ये भी लिक्विड की तरह गैसेस का भी जो शेप होता है वो जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और the third one is volume. So solid sum have definite term volume. Similarly, liquids have also different volume, but the volume of gases is indefinite. Compressibility. You can say compressibility. So solids are not compressible, liquids are almost compressible, or gases are highly compressible. Fluidity cannot flow, solids cannot flow, liquids can flow, and gases can also flow. Rigidity. Solids are highly rigid, liquids are less rigid, gases are not rigid. Diffusion. We have discussed previously that solids have slow diffusion, liquids have fast diffusion, and gases have very fast diffusion. So diffusion means the um, movement of molecules by collision with each other from one place to another place, from the region of high concentration to a region of low concentration to a hole. So this is diffusion. Similarly, space between particles. Solid particles are mostly packed. They have no space between them. Liquid particles, molecules are closely, less closely packed, while that of the gases are least closely packed. Intermolecular forces. Solids have strong intermolecular forces. Liquids have slightly weaker than solids, and gases have negligible intermolecular forces. Now, types of solids. Solids can be classified into two types based on the arrangement of particles. They are amorphous solids and crystalline solids. Solids को हम जहाँ तक solids की types का ताल्लुक की किस्में कितनी किस्में होती है, solids की दो किस्में होती है, two types, लेकिन उसका निसार एलिमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर होता है। तो ये जो दो किस्में हैं इनमें amorphous solids होते हैं, amorphous solids और crystalline solids होते हैं।
यानी दो किस्में जो सॉलिड्स की होती है इनमें से एक को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और दूसरे को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो फर्स्ट लेट्स नो अबाउट दी एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब ये है कि शार्पनेस solids in which particles are not regularly arranged, in which the particles are not properly arranged in three dimensions, are called amorphous solids. यानी जो सॉलिड्स हैं amorphous solid वो सॉलिड्स हैं जिसमें particles are not regularly arranged, जिसमें particles regularly arranged नहीं होते या जिसमें particles थ्री डायमेंशन में arrange जो नहीं होते प्रॉपरली, तो इसको हम कहते हैं amorphous solids। या हम ये कह सकते हैं कि in simple words you can say that amorphous solids are one that lacks ordered arrangement of its particles। यानी amorphous solid में जो particles की arrangement होती है, जो arrangement होती है particles की वो बाकायदा तरतीब से नहीं होती, ऑर्डर नहीं होती, तरतीब से नहीं होती। amorphous solids are hard like true solids। amorphous solids सख्त होते हैं but they don't have sharp melting point। they melt over a range of temperature, for example glass, wax, butter, plastic, rubber, cotton, candy, etc. So these are all amorphous solids। These are amorphous solids, butter, wax, particle arrangement, cotton, candy। So you can say that this is a particle arrangement of amorphous solids। So you can say that this is not arranged properly, leaks, you can say the particles are not properly arranged here, not ordered. Particles are not ordered। So inside the particles are not ordered। So these are the amorphous solids। Next one is second one is crystalline solids। Crystalline solids are the solids in which the particles yeah, are ions, atoms, and molecules are arranged in a regular three-dimensional pattern। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपरली रेगुलर और थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जबकि मॉर्फस में ऐसा नहीं होता। दे हैव definite shape or faces, each face has definite angle, the other face। Pure crystalline solids have sharp melting point, for example sodium chloride, naphthalene, etc। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाकायदा थ्री डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें बाकायदगी से इनको अरेंज पार्टिकल्स सारे थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ये पार्टिकल्स बाकायदा मौजूद है। जैसे particles are orderly arranged or can say in three-dimensional forms arranged।
So these are called crystalline solids, and they have uh, definite, you can say, surfaces or faces. Each face is definite angle, प्रॉपर एंगल होता है हर फेस का। दूसरे की जिस तरह ये प्रॉपर एंगल से बाकायदा इसको अरेंज किया गया है ये। तो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड इस crystalline structure of sodium chloride. This is the crystalline structure of sodium chloride. So next one is the uh, allotropy. What is allotropy? We can say the existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy. The different forms are called allotropic forms. हमारे पास एक एलिमेंट है, वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और जो ये जो एलिमेंट है, ये इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन, कार्बन जो एटम है, ये हमारे पास टू एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है। टू एलोट्रॉपिक फॉर्म में, टू एलोट्रॉपिक फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट और डायमंड में, ग्रेफाइट और डायमंड में। तो ये दो फॉर्म में हमारे पास जो कार्बन है वो होता है। तो ये जो दो फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, these are the two allotropic form of carbon. So the allotropic form of element is due to the following reasons. Number first one, the existence of an element in more than one physical state or forms such as carbon, uh, jewel shoot, diamond, graphite, etc. Number two, the existence of two or more kinds of molecules of an element. In this case, each molecules have different number of atoms, such as allotropic form of oxygen, O2 and O3. O3 is ozone, and O2 is oxygen molecule. Number three, different arrangement of two or more atoms or molecules in crystals of an element. For example, sulfur shows allotropico, monoclinico, and orthorhombico, rhombic form. So due to different element of molecules, so is it in the crystals. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एग्जिस्टेंस है ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में, जैसे कि कार्बन है ना, ये डायमंड और ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। या जो एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा molecules, the existence of two or more kinds of molecules of an element, यानी एक एलिमेंट का एग्जिस्ट होना दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का। तो इन दिस केस, इस केस में ईच मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो इस केस में फिर जो हर मॉलिक्यूल होगा उसके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सच एज एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन O2 में दो ऑक्सीजन एटम में, O3 ओजोन में थ्री ऑक्सीजन एटम में,
तो इसलिए कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे अगर वो एक से ज़्यादा फॉर्म में काइंड्स में मौजूद है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट of two or more atoms or molecules in crystal of an element. For example, sulfur, different element of atoms of two or more atoms. यानी जो दो या दो से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स एटम है उनकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है ये मोनोक्लिनिक और ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में मौजूद होते हैं बिकॉज इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस क्रिस्टल में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है। Now, allotropes of an element always show different physical properties but have same chemical properties. जो इलेक्ट्रॉप्स होता है जिससे कार्बन है वो डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है तो ये हमेशा जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है बल्कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। मिसाल के तौर पर कार्बन ये जो मैंने बताया कि डायमंड फॉर्म में जो होता है ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है एंड ग्रेफाइट जो फॉर्म में ये हेक्सागोनल शेप में होते हैं तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है यानी कि एक फॉर्म हेक्सागोनल है एक फॉर्म क्या है हेक्सागोनल है और एक फॉर्म क्या है टेट्राहेड्रल एक फॉर्म टेट्राहेड्रल है और एक है हेक्सागोनल। तो यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल की जो ये अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वो सेम होगी लेकिन फिजिकली ये दोनों डिफरेंट है। So the change in temperature also changes the arrangement of atoms in allotropes. टेम्परेचर को चेंज करने से कम करने से बढ़ाने से जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है इलेक्ट्रॉन्स में वो भी चेंज हो जाती है। सो विद चेंज इन टेम्परेचर न्यू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एक डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉप से वो बनेगा। सो द टेम्परेचर एट विच one allotropic one allotrope changes into another allotropic form is called transition temperature। यानी वो टेम्परेचर जिसमें अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रॉप को गर्म करें वो अपनी चेंज करे अपनी जो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है एक से दूसरे में तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द टेम्परेचर एट विच टू इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हु एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी वो टेम्परेचर जिसमें टू इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स एक एलिमेंट के वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में को एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस 8 orthorhombic form exists in equilibrium at 95.5 with monoclinic form। तो टेम्परेचर यहाँ पर 95.5 डिग्री सेल्सियस है तो इस 8 जो है जो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में है ये वाला जो है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में है ये मोनोक्लिनिक फॉर्म इस 8 मोनोक्लिनिक फॉर्म में के साथ हो इन एक एलिमेंट हो ट्रू फॉर्म्स में ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में यानी एक खास टेम्परेचर 95.5
फाइव तो अ, यानी एक टेम्परेचर एक एलिमेंट के जो दो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं उनका जिस टेम्परेचर पे ये दो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना तो इस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये जो 95.5 है क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो सिमिलरली ये जो है ऑर्थोरम्बिक मोनोक्लिनिक तो सिमिलरली ये ग्रेटिन क्यूबिक फॉर्म में एंड वाइटिन टेट्रागोनल फॉर्म में एट 13.2 डिग्री सेल्सियस। तो 13.2 this is the transition temperature. Similarly, potassium nitrate is a vital and potassium nitrate at orthorhombic form exists at 128.5 degree Celsius. So this can say that these temperatures are called transition temperatures. And these are two isotropic forms of an element. You can say different elements, two isotropic forms of different elements. Now, now isotropic form of carbons. Carbon exists in crystalline isotropic forms as well as non-crystalline or amorphous isotropic forms. Carbon exists in three crystalline isotropic forms, namely diamond and graphite and bucky balls. Carbon exists in three crystalline isotropic forms. Here it is mentioned as diamond, graphite and bucky balls. So carbon also exists in non-crystalline or amorphous isotropic forms such as coal, coke, charcoal, and Blake, etc. We will discuss the crystalline isotropic form in detail here. So, structure of diamond. Diamond is the crystalline isotropic form of carbon. In diamond, carbon exists in cubic form. Each carbon atom is tetrahedrally bonded by four covalent bonds with other carbon atoms. Covalent bond is very strong, so diamond is very hard and has high melting point. Diamond is bad conductor of electricity because all the four valence electrons are used in the formation of covalent bonds, which tightly filled with each other. So we can say structure of diamond. Diamond कहते हैं diamond is the crystalline form of carbon. The diamond क्या है ये crystalline form of carbon है. Electropic form of carbon. तो डायमंड में कार्बन क्यूबिक फॉर्म में एडजस्ट करता है तो हर कार्बन एटम हो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए दूसरे कार्बन एटम के साथ इन डायमंड में हर कार्बन फोर कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से दूसरे फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए से दूसरे कार्बन के साथ ये जुड़ा होता है जिस तरह ये कार्बन है यानी ये कार्बन है ये कार्बन इस तरह का ना ये सारा जो है ना ये जुड़ा होता है उसमें।
So covalent bond is very strong bond. So diamond is very hard. क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो जिसकी वजह से ये डायमंड भी सख्त होता है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑल फोर इलेक्ट्रॉन्स आर जो चार कार्बन है कार्बन उसमें जो चार फोर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में वो विच चाइल्डली healed with each other. ये structure of diamond is the structure of diamond in which each carbon atom is bounded to uh, four other carbon atoms. So this one, if we take this carbon atom, this is bounded with this carbon, one, and this is with two, and this is with three, and this is with four. Four other atoms in the covalent bond. So this, you can say that these are the covalent bond of carbon. So due to which all the four valence electrons are used to the four bound to form covalent bond. So due to this formation of these four covalent bonds of four carbon, the diamond is very rigid. सख्त होता है. Now let's come to a structure of graphite. In graphite, each carbon atom is only covalently bonded in three other carbon atoms. तो हमने पढ़ा है कि जो कार्बन है उसमें कार्बन एटम जो है ना फोर कोवेलेंट बॉन्डेड होता है तो ग्रेफाइट में द कार्बन एटम इज ओनली covalently bonded with three other carbon atoms rather than four atoms is in diamond. Carbon exists in hexagonal form of sheets layers. So these sheets linked with each carbon atom by weak attractive forces. The sheets slides over each other. Graphite is soft, it is used to as a lubricant in heavy machinery. It is good conductor of electricity because it has free electrons available. ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है तो ये लुब्रिकेंट में हेवी मशीन में यूज़ होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और तो ग्रेफाइट और डायमंड में फ़र्क है कि ग्रेफाइट में जो है कार्बन एटम जो होता है ग्रेफाइट में वो थ्री यानी कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है ग्रेफाइट में फोर की बजाय जिस तरह ये ग्रेफाइट डायमंड में फोर थे तो ग्रेफाइट में तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है जो कार्बन एटम होता है जबकि डायमंड में ये कार्बन फोर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो अब ये उसमें मेन डिफरेंस है इसके अलावा जो है ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर के इसमें फ्री टर्न होते हैं तो ये उसमें मेन डिफरेंस है This is about the structure of buckyball. Buckyball is the crystalline allotropy form of carbon. It is recently discovered in 1980. Buckyball consists of two 20 to 100 carbon atoms. The buckyball's atoms are arranged in hollow cage-like structure. Carbon atoms link with each other and adopt the shape of football. In buckyball, the carbon atoms join together, making pentagonal, hexagonal structure. Buckyballs are used in semiconductor, superconductor, and lubricants. So this is the structure of buckyball. So this is the
end of end of chapter, end of chapter 5. So we will in, uh, discuss this. These are the taken from the chapters, the key points. So these are the key points which are taken from the chapter, which is a matter exists in three states: so solid, liquid, and gas. So the highest energy state of matter is called gas. The highest energy state of matter. Diffusion is spontaneous mixing of molecules of different gases to form a homogeneous mixture of random motion and collision of the molecules. Uh, it is the movement of molecules from high concentration towards low concentration. Similarly, effusion is the escape of molecules in the gaseous state one by one without a collision through the whole of a molecular through the whole of molecule the dimension. Force exerted by gas per unit area of a container is called pressure. Compressibility of a substance is the change in volume with the per unit change in pressure. Similarly, mass per unit volume is called density. According to the Boyle law, volume of a given mass of a gas decreases with the increasing pressure, constant pressure. Charles law states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature to constant pressure. Absolute temperature is temperature on Kelvin scale. Evaporation is the spontaneous change of liquid into gaseous state. The pressure exerted by the vapors of a liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or external pressure. Similarly, temperature at which the liquid and solid state exist in equilibrium is called freezing point of liquid. Melting point is temperature at which the solid starts melting and exists in dynamic equilibrium with the liquid state. Amorphous, amorphous solid is one that lacks ordered arrangement of its particles. So this is the end of this chapter, and we will discuss uh, uh, in next video. So there also you can say this crystalline. There is some lift to some points. Crystalline solids are the solids with which particle signs molecules are arranged in a regular three-dimensional pattern. The existence of an element in more than one physical state and phases are called allotropic forms or allotropes and this phenomena is called allotropy. The temperature at which one allotropic changes into another allotropic form is called transition temperature. So we will next video we will solve the exercise. This will be next video. We will solve the exercise.